Now today, let's start with chapter number 4, weather and climate. In this chapter, we will study about weather. Weather, it is a day-to-day changes जो होता है. कभी वो sunny हो सकती है, कभी rainy हो सकती है, कभी आपने देखा होगा windy हो सकती है. ये क्या आपके weather condition है जो day-to-day changes होती है. If we talk about climate, it remains same for more than 2 to 3 months. Now let's start with the chapter atmosphere. What is atmosphere? People live in different places in the world and follow varied lifestyle. The food they eat, clothes they wear, and the house they live in vary from place to place. और जो variation है due to condition of weather of a place where they live. Now weather. Weather is the condition or the state of the atmosphere over a short period of time at a particular. It keeps changing from time to time. In morning when the sun is at the horizon, weather is pleasant. और जब noon में जो sun है वो brightly shine करता है over or above the head and weather is very hot. And again in the evening when the sun sets, weathers become pleasant and weather of the place may change day by day. और वो day by day क्या करती है? Change करती है. Weather at one place may differ from the other place at the same time. During the months of April, May and June, it is very hot in northern hemisphere and cold in southern hemisphere. In the months of December, January, February, क्या होता है? Opposite होता है. जो changes होता है weather condition में give rise to season and they affect our daily activities. हम clothes जो पहन रहे हैं, खाना जो हम खा रहे हैं, सबको affect करते हैं. Like in summer season, we wear cotton clothes. In winter season, we wear woolen clothes. And rainy season, we wear raincoats and gum. Now climate. Climate is the average weather condition of a place for a long period of time. It is different at different places. It may rain throughout the year. Some areas of the world and some areas may be dry. And the climate of the place affect the food habits, clothing, transportation, and houses of people. People who study climate are called climatologists. जो क्या करता है climate को study करता है उनको क्या बोला जाता है? Climatologist. What are the elements of weather and climate? Temperature is the elements of weather and climate. Temperature, it is the measurement of warmth and coolness of air around us. Temperature and the amount of rainfall at different places of the world is not same. As we travel far wide, we spot differences in the climatic condition. There are many factors which affect the climate of a place. Then we have humidity and rainfall. Amount of water, vapor or moisture present in the air is known as humidity. Degree of humidity of a place is related to distance from sea. Closer the place is to the sea, the more humidity. Humidity of a place increases in the rainy season as airs come more moisture in them. That is why we sweat a lot in rainy season. And humidity also affects the climate of a place and causes rainfall. And humidity causes snowfall instead of rainfall. Humidity की वजह से snowfall होता है ना कि आपका rainfall होता है. Now factors influence climate. There are many factors जो आपके climate को influence करते हैं. Like first is latitude. मतलब जो आपका distance है place का from the equator. क्योंकि जो equator है वो ज़्यादा sunlight या sun rays receive करता है and other places which is closest to the sun. As we move away from the equator towards the pole, temperature gradually decreases. अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है. एंड द वेरिएशन इज ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ एंड द एंगल एट विच सन रेज फॉल. वी नो दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट्स एक्सिस टिल्टेड एंड द रेन्स ऑफ सन फॉल्स वर्टिकली और स्लैंटिंग. या तो वर्टिकल पड़ती है फिर स्लैंटिंग पर. द वर्टिकल रेज passes through less volume of the atmosphere and hardly lose heat. That is why regions near the equator receive direct sun rays are warmer. On other hand, slanting rays pass through the larger volume of atmosphere and lose heat. And the region away from equator that get slanting rays of the sun are cold. जिनको slanting rays, देखो जैसे ये क्या पड़ रही है? Slanting rays पड़ रही है तो ये क्या होंगी? ठंडी होगी. और ये जो direct rays पड़ रही है थोड़ी गर्म. Now altitude, it is the height of a place above the sea level. देखो जो ज्यादा ऊंची हाइट होगा वो ज्यादा ठंडा होगा एज कम्पेयर टू जो आपके नियर हो. द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय एल्टीट्यूड. द एयर क्लोजर टू द सरफेस इज डेंस एंड एब्जॉर्ब मोर एंड दिस मेक प्लेस लोअर एल्टीट्यूड हॉट. एटमॉस्फेयर इज थिनर एट द हाई एल्टीट्यूड और ये एब्जॉर्ब करता है लेस है. और हिल स्टेशन एरिया क्या होता है? कोल्ड होता है. दैट इज आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द माउंटेन पीक जो होती है वो थ्रू आउट द ईयर किससे कवर्ड होती है? स्नो से कवर्ड होती है. विंटर में ज्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल शिमला इज एट हाई एल्टीट्यूड, इज ऑलवेज कूलर देन दिल्ली विच इज एट लोअर एल्टीट्यूड.
देखो है एक ही जगह, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन वो हाई एल्टीट्यूड पर, वो लोअर, दिल्ली लोअर एल्टीट्यूड पे है और आपका जो शिमला है वो हाई एल्टीट्यूड. नाउ वी हैव डिस्टेंस फ्रॉम द सी. The distance from the sea also determine the climate of a place. Place near the sea have moderate climate, but places that is far away from the sea, जो sea से दूर है, वो थोड़ी ठंडी है. Cold in winter and hot in summer, because जो land है वो ज्यादा तेजी से फास्टली क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, and the loses heat faster than water. During summer, land gets heated quickly and the air above the land surface becomes hot. This hot air rises up, वो rise करती है ऊपर की तरफ, and the cool air जो above the sea होती है वो blow करती है towards the land और वो occupy करती है space. And the cool air brings down the temperature of the place closer to the sea and it does not make them hot, और उसको hot नहीं बना. The places which are far away from the sea does not get cool air and they remain hot in summer. और ये क्या रहते हैं, hot रहते हैं कब, summer. Now during winter what happens, land जो होता है आपका वो ठंडा हो जाता है, water in the sea, ठीक है, उससे ज्यादा. And the warm air above the sea rises up and moves towards the land. This raises the temperature of the place along the coast. By the time this air reaches the places away from the sea, तो वो अपनी warmth को क्या करता है, छोड़ देता है. फिर क्या होता है, जो ये places है ये ठंडी रहती है, cold रहती है in winter, and Hyderabad which is far away from the sea is hotter in summer and cooler in winter. Like विशाखापट्टनम जो coast पे वो वाला, देखो है दोनों सी के एक ही जगह पे, लेकिन एक सी के पास है, एक सी से दूर है. Now direction of the wind. Horizontal moving air is called wind, और hot wind increases the temperature of a place. जो hot wind होती है वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है और cold wind टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती है. Wind also will bring rain to the places where they blow, and the wind that blows from the sea to the land is known as onshore wind या फिर sea. ये मॉइस्चर कैरी करती है और क्लाइमेट को कोस्टल एरिया की ह्यूमिड बनाती है, और ये रेन में क्या brings rain to the sea. The wind that blows from the sea to the land is known as onshore wind or sea breeze. It carries moisture and make the climate in the coastal area. ये रेन लेके आता है इन एरिया में. And the wind that blow from land to sea, जो लैंड से सी पे जाते हैं इनको हम ऑफशोर कहते हैं या फिर लैंड ब्रीज. ठीक है, लैंड टू सी क्या होती है आपकी, ऑफशोर या लैंड. ये ड्राई कर देती है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता है. एंड इंडिया इज अफेक्टेड बाय सीजनल, जिसको मानसून कहते हैं. और जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है वो रेन लेके आती है फ्रॉम जून टू सितंबर, और नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड क्या लेके आती है, रेन लेके आती है कब, दिसंबर एंड जनवरी. नाउ व्हाट आर द क्लाइमेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड. वी हैव टेम्परेट, टॉरिक, frigid zone. These are the three different zones. Now temperature and the amount of rainfall determine the climate of the place. और हमने वो हमारे तीन मेन क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड करा है, दैट इज टेम्परेट, टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड. ठीक है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वी हैव टॉरिड. ठीक है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और आर्टिक सर्कल, दैट इज योर टेम्परेट जोन, and Tropic of Capricorn से and Antarctic Circle, that is your torrid, temperate zone. And जो ऊपर है वो आपकी क्या राइट करती है, frigid. First is torrid zone. The region between the two tropics, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, इसको हम torrid zone कहते हैं. ये डायरेक्ट सनरेज रिसीव करता है, ये हॉट रहता है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. रेनफॉल बहुत ज्यादा हैवी होती है यहाँ पे, एंड दे हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट, इसको हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं. देन वी हैव टेम्परेट जोन, the region between Tropic of Cancer and Arctic Circle and Tropic of Capricorn and Antarctic. These zone receive slanting rays of sun. ये slanting rays of sun को receive करते हैं. Climate ना तो ज्यादा गर्म होता ना ही ज्यादा ठंडा होता, and they have cold winters and mild summers. Then we have frigid zone. The region around the poles are known as frigid zone. They lie between Arctic Circle and North Pole and between Antarctic Circle and South Pole. ये इक्वेटर से बहुत फार होते हैं, इसलिए जो ये क्या रिसीव करता है, यहाँ पे जो सन की रेस पड़ेगी वो बिल्कुल यही स्लैंटिंग पड़ती है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द मंथ ये कैसा रहता है, ठंडा रहता है. फ्रिजिड जोन को सनरेज मिलती ही नहीं है. दैट इज व्हाई दे आर कवर्ड विद थिक शीट ऑफ आइस एंड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड. और क्लाइमेट कैसा होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. नाउ आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.